अरौली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज नवी मुंबई के तुर्बे स्टोर्स में मुफ्त आरोग्य शिविर और औषधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी दीपक भोसले और रोहित घंटे के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में सूरज हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टरों ने ईसीजी, ब्लड शुगर, रक्तचाप, ऑडियोमेट्री टेस्ट समेत तमाम रोगों की जांच पड़ताल की और नागरिकों को जरूरी मार्गदर्शन भी दिए। आरोग्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर समाज सेवक अनिल पाटिल, राजेंद्र इंगले, पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे, प्रहलाद शेलारकर, उत्तम सुरवसे, गुरुवाक चौरे, कल्लप्पन कोहली, अभय गुप्ता, मोदीन नदाफ और गणेश शिंदे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने सेहत की जांच कराई। डॉक्टरों ने उन्हें औषधियों का भी वितरण किया। इस शिविर की जानकारी देते हुए पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे ने पूर्व विधायक संदीप नाइक को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके जन्मदिन पर आम जन और जरूरतमंदों की सेहत जांच और उपचार की सुविधा मिले, इसीलिए यह आरोग्य शिविर लगाया गया। उन्होंने आयोजन के लिए युवा समाज सेवी रोहित घंटे और दीपक भोसले की सराहना की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नवी मुंबईचे युवकांचे श्रद्धास्थान आणि ऐरोलीचे प्रथम आमदार आणि नवी मुंबईचं लाडकं युवक नेतृत्व असे आमचे सर्वांचे लाडके असे संदीपजी नाईक साहेबांचा आज उद्या वाढदिवस आहे आणि त्याच्या पूर्वसंध्येला आज आमच्या तुर्बा वार्ड क्रमांक 70 येथे त्यांच्यावर आम्ही सर्व प्रेम करणारे आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आरोग्य शिबिर या ठिकाणी आम्ही ठेवलेलं आहे। संदीप नाईक साहेबांनी कालच आम्हाला आवाहन केलेलं आहे की ते एक दुर्गम भागामध्ये समाज सेवा करण्याकरता त्या ठिकाणी जात आहेत। त्या आम्हाला त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की तुम्ही सामाजिक उपयोग उपक्रम घ्या त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त। तर त्यानुसार आम्ही आज या ठिकाणी आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। या आरोग्य शिबिरामध्ये हृदय संदर्भात असतील किंवा संपूर्ण शरीरातील ज्याही आजार आहेत त्या संदर्भात संपूर्ण चेकअप, इव्हन ECG असतील, त्यांना मेडिसिन द्यायचं असतील, BP, शुगर आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचं त्या ठिकाणी मार्गदर्शन, ह्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी या कॅम्पमध्ये चालू आहेत सकाळपासून। आणि तुम्ही बघताय की मोठ्या प्रमाणात आमच्या वार्ड क्रमांक 70 तुर्बेश्वरमधील सर्व नागरिक, आमच्या महिला त्या शिबिराचा लाभ घेत आहेत। आणि खास करून मी रोहित आपला दीपक भोसले आणि रोहित घंटे आणि उत्तम सुरवशी, गुरुदास वागचौरे हे सर्व त्यांच्या टीमने खूप मेहनत कालपासून घेऊन हा आरोग्य शिबिर यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला आणि भाईच्या वाढदिवसानिमित्त हा एक चांगला उपक्रम आम्ही सर्वांनी केला। आम्हाला सर्वांना समाधान आहे। वहीं आम लोगों ने आरोग्य शिविर को उपयोगी बताया और पूर्व विधायक संदीप नाइक के जन्मदिन पर खास तौर पर आयोजित इस शिविर के लिए आयोजकों का आभार जताया। संदीप भाई के जन्मदिन के तरफ से हम लोग यहाँ मतलब आए हैं और ये जो टेस्ट हो रहा है उनके तरफ से हो रहा है और शुगर, BP और ये क्या नाम है सब चेक हो रहा है। सबको दवा दे रहे हैं। हमारे इधर जितने लोग हैं सब अच्छे से जांच चेकअप हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब लोग हैं और अच्छा व्यवस्था, सब चीज़ अच्छा उनके उससे हो रहा है। उनके बर्थडे की तरफ से सब अच्छा से हो रहा है। मैं संदीप भाई को उनके बर्थडे का शुभेच्छा देती हूँ और हम उनके कार्यकर्ता भी है। यहाँ पे आज कैंप रखा गया उनके बर्थडे के लिए, तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक है वो सब मतलब उसका लाभ उठा रही है और उनका हमारे साथ इतना ही साथ ऐसा अभी हमेशा जब तक हम हैं तब तक उनका साथ हमको चाहिए। जैसा संदीप नाइक उनका साथ है, उनको हमारे पीछे उनका साथ है। और जो जितने भी भाई है बहनें जो भी आए हैं उनके लिए मैं सबको शुभेच्छा देती हूँ, धन्यवाद देते हूँ। इथे तुर्ब्यामध्ये राहणारी एक गरीब ह्याच्यातली मुलगी आहे आणि इथं जमलेले जे माझे भाऊबंद आहेत आणि माझे ते दादा राजू शिंदे, त्यांनी आमच्या महिलांसाठी म्हणजे आतापर्यंत खूपच काय केलेलं आहे आणि गोरगरिबांसाठी म्हणजे खूप उपकार आहेत त्यांचे आमच्यावरती आणि आम्हाला बरेच महिलांना त्यांनी कामाला लावले, गोरगरिबांची मदत करतात आणि अर्ध्या रात्री जरी फोन केला तरी ते आमच्यासाठी मदतीला उभे राहतात आणि त्यांचे असे महिन्यातनं एकदा का होणं कुठे ना कुठे शिबिर असतात, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप धन्यवाद मानतो आणि तो आमचा भाऊ म्हणून आमच्या सतत पाठी राहतो आणि असंच तो आमच्या पाठी राहावं एवढंच विनंती करते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।